अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर मरियम हसन और आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और लेसन नंबर 1 आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया होगा और उसे अपनी नोटबुक्स पे भी कर लिया होगा। आज लेक्चर नंबर 9 में हम यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं और यूनिट नंबर 2 है डिग्निटी ऑफ लेबर, यानी कि मेहनत की अज़मत। सबसे पहले एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि ये जो लेबर है LABOUR, इसके दो स्पेलिंग्स हैं, एक ब्रिटिश हैं और एक अमेरिकन में है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। LABOR भी कुछ जगहों पे मैंने लिखा हुआ है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब है, सिर्फ अमेरिकन और ब्रिटिश का डिफरेंस है। ओके, लेट्स डिस्कस द लेसन। डिग्निटी ऑफ लेबर मतलब मेहनत की अज़मत। अब आप लोग पिक्चर में देखें कि एक पिक्चर में कुछ लोग जो हैं वो बोरियां उठाए हुए जा रहे हैं और दूसरी पिक्चर में कुछ लोग मशीन चला रहे हैं और साथ ही एक लेडी हैं जो कुछ काम कर रही हैं, ड्रम में कुछ डाल रही हैं। तो बेसिकली ये पिक्चर लगाने का मकसद ये है कि आप लोगों को इस लेसन में ये सिखाया जाए और समझाया जाए कि जितने भी काम हैं, चाहे वो आप हाथ से कर रहे हैं या मशीनों से कर रहे हैं, तमाम के तमाम काम, तमाम के तमाम प्रोफेशंस इक्वल हैं। अगर कोई दर्जी है, अगर कोई मज़दूर है, या कोई टीचर है, या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, या कोई इंजीनियर है, ये सब इक्वल हैं क्योंकि ये सब मेहनत कर रहे हैं। और जब इंसान मेहनत करता है तो अल्लाह ताला मेहनत में बरकत डालता है। ओके, बाकी पॉइंट्स हम लोग जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेसन में सबसे पहले मैं आपको वर्ड मीनिंग्स करवाऊंगी, तो इसके लिए आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए और टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 और 16 आज हम कवर करेंगे। और ये टोटल 2 पेजेस का लेसन है, इंतहाई ईजी है और एक बड़ा खूबसूरत सा मैसेज भी है इस लेसन में आपके लिए, जो कि हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, पेज नंबर 15 मैं बुक से पैराग्राफ वाइज रीडिंग करती जाऊंगी और उसके बाद हम वर्ड मीनिंग्स को डिस्कस करेंगे। ओके, डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स, अंडरलाइन द वर्ड डिग्निटी, that all types of professions, underline the word professions, are respected equally. No profession, whether physical or mental, underline the word physical, is superior to others. Underline the word superior. It is said work is worship. Underline the word worship. The underlying thought, underline the word underlying, in the saying is that every profession is noble. Underline the word noble. Dignified, underline the word dignified. And honorable, underline the word honorable. The proverb equalizes, underline the word equalize. Work with worship. Okay, फर्स्ट पैराग्राफ में आप लोगों ने वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया। अब इसके मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। डिग्निटी मतलब वकार, अजमत। प्रोफेशन पेशा। सुपीरियर आला या अफजल। वर्शिप इबादत। नोबल मोज़ेज़ या आला। प्रोवर्ब ज़रबुल मिसल। डिग्निफाइड बावकार। लेबर मेहनत। फिजिकल जिस्मानी। सेइंग मकोला या कहावत। अंडरलाइन बुनियादी। ऑनरेबल बाइज्जत या मोज़ेज़। और लास्ट वर्ड है इक्वलाइज, बराबरी या मुसावी करना। नेक्स्ट पैराग्राफ की मैं रीडिंग कर रही हूँ, आप इसे गौर से सुनिए। इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ. It guides the mankind in all spheres of living. Underline the word sphere. Underline the word code. Dignity of labor is no exception in this regard. Underline the word exception. Regard. Regard को भी underline कीजिए. The life and sayings of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam highlight the honor in which labor, both manual, underline the word manual, and intellectual, underline the word intellectual,
is valued by Islam. Underline the word valued. He loved to work with his own hands. He is respected. He is reported, underline the word reported, to have said, nobody has ever eaten a better meal than that which one has earned by working with his own hands. Hazrat Daud never ate anything but the earnings, underline the word earnings, of his manual labor. Next paragraph. When Masjid-e-Nabwi at Medina was being built, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam participated, underline the word participated, in the process of its construction, underline the word construction. He carried the stones, mixed mortar, underline the word mortar, and built the walls. In journeys, he insisted, underline the word insisted, to share the duties. He pitched, underline the word pitched, the tent, underline the word tent, picked food for fire, underline the word picked, carried water, etc. Next paragraph. The merciful Nabi always helped others in their work. Workers are our brothers and sisters. They are our helpers. We need them. We depend on them for many things. Underline the word depend. That we cannot do for ourselves. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, your brothers are your responsibility. Allah has made them under your hands. So, whosoever has a brother under his hand, let him give him food as he eats and dress as he dressed. Do not give them work that will overburden them. Underline the word overburden. And if you give them such tasks, then provide them assistance. Underline the word assistance. Okay, next paragraph. Both intellectual and physical, underline the word intellectual, underline the word physical, work is known as labor, underline the word labor. A teacher teaches at school, a lawyer practices law in court, underline the word court. A farmer works in fields, a worker works in factory, a miner, underline the word miner, works in the mine, underline the word mine. A doctor practices medicine, underline the word medicine. An artisan, underline the word artisan, works in a factory. A clerk works in an office. Dignity of labor demands, underline the word demand, that the work of artisans, farmers, miners, etc. should be regarded as respectable as that of doctors, teachers, lawyers, etc. Next page है हमारे पास prosperity of a nation depends upon the hard work it does. Underline the word prosperity. Underline the word depends. If a nation does not give importance to labor, it will remain backward. Underline the word backward. European nations learned to work with tools, underline the word tools, and machines, underline the word machines, after the Industrial Revolution. Underline the word industrial, underline the word revolution. The progress of Europe is outcome of the hard work of the people and the recognition, underline the word recognition, of labor of the laborers. Common workers work in factories, fields, mines, etc. Their labor moves the wheel of progress, underline the word wheel. This movement brings prosperity and progress of a country. Hence, we can say work is power. Therefore, work should be given recognition and importance. On the other hand, physical labor keeps us active, underline the word active, and physically fit. It also promotes fellowship and cooperation. Underline the word promotes, underline the word fellowship. Okay, in the developed countries, people recognize dignity of labor. Underline the word recognize. There is no servant class. Underline the word servant.
In the West, the people do their household work, underline the word household, themselves. They do not feel any disgrace, underline the word disgrace in this. Whereas in underdeveloped countries, underline the word underdeveloped, well-to-do, underline it, people consider it below their dignity to work with their own hands. For progress, it is essential that, underline the word essential, that we should get rid of such false ideas of dignity and respect. Okay, false ideas को underline कर लीजिए. Last paragraph, it is high time को underline कीजिए, that we should recognize that all labor is dignified and prestigious. Underline the word prestigious. No profession is inferior or superior to others. It is our attitude, underline the word attitude, and thinking that makes it dignified or otherwise. Underline the word otherwise. Okay, code, ज़ाब्ता या कानूनी ज़ाब्ता, mankind, नुए इंसानी, exception, इस्तिस्ना या से अलग रखना, sayings, मकोला या कही हुई बात, value, कदर करना, never, कभी नहीं, guide, रहनुमाई करना, sphere, तबका या हल्का, regard, सिलसिला, highlight, उजागर करना या वाज़े करना, earn, कमाना या हासिल करना, manual, हाथ का या दस्ती काम, build, तामीर करना, process, अमल, mortar, सीमेंट या चूने का मसाला, शेयर, हिस्सा लेना या बटाना, पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना, कंस्ट्रक्शन, तामीर, इंसिस्ट, इसरार करना, पिच, खैमा वगैरह खड़ा करना, मर्सीफुल, नरम दिल, रहम दिल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, प्रोवाइड, मुहैया करना, डिपेंड, पर इन्हिसार करना, ओवरबर्डन, ज़्यादा बोझ डालना, असिस्टेंस, मदद, इंटेलेक्चुअल, जहनी या अकली या दिमागी, लेबर, मेहनत, कोर्ट, अदालत, माइंड, कान, फिजिकल, जिस्मानी. अब ये कान, ये वाला एयर वाला कान ना समझ लीजिएगा, ये दूसरी कानें होती हैं, जैसे नमक की कान हो गई, ठीक है. फिजिकल, जिस्मानी, लॉयर, वकील, माइनर, कानकुन, आर्टिसन, दस्तकार, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, रेवोल्यूशन, इनकलाब, आउटकम, नतीजा, व्हील, पहिया, ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये पे लिखा हुआ है, ये पहिया है, एक्टिव, मुतहर्रिक, फेलोशिप, भाईचारा, बैकवर्ड, पसमानदा, हाई टाइम, मुनासिब या दुरुस्त वक्त, डिग्निफाइड, बावकार, इंफीरियर, अदना या छोटा या घटिया, प्रेस्टीजियस, इज़्ज़त व वक़ार का हामिल, रिकग्नाइज, पहचान या जान लेना, एटीट्यूड, रवैया, सुपीरियर, आला, अदरवाइज, नहीं तो, वरना. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन तक आप लोगों ने इस लेसन के सारे वर्ड मीनिंग्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने ट्रांसलेशन स्टार्ट करनी है. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.